Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies and also revised your previous chapters. Today we are going to start our chapter 8, which is animals for transport. इस chapter के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से animals हैं जिनको हम use करते हैं as a transport for ourselves as well as for different goods and services to provide around the world. So, without wasting any time, let's understand about this in this chapter. The name of our chapter is Animals for Transport, and the topics which we will discuss here are pack animals, draught animals, sensitivity towards animals. So, early humans were not able to travel far before the wheel was invented. यानी कि जब wheel invented नहीं हुई थी, invent नहीं हुई थी, उस टाइम पे early human beings के लिए travel करना बहुत ज़्यादा complicated था. They traveled on foot, या तो वो foot की मदद से travel करते थे और रोड एनिमल्स फॉर डिस्टेंसेस, या फिर वो एनिमल्स के ऊपर बैठ के ट्रेवल करते थे टू कवर वेरियस डिस्टेंसेस. दिस इज हाउ द यूज ऑफ एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिगिन. इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनका एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होना शुरू हो गया. द व्हील इज सेड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड टिल डे. यानी कि व्हील जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ऑफ द ह्यूमन काइंड आज भी. वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट व्हील्स टुडे. The world of transport would come to a standstill without wheels. अगर wheels नहीं होंगी तो transport की कैटेगरी में हमारा वर्ल्ड एकदम स्टैंड स्टिल हो जाएगा, बिकॉज हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो सब व्हील्स की मदद से ही वर्क कर पाते हैं. The invention of the wheel helped early humans to move from one place to another easily and comfortably. व्हील्स की इन्वेंशन की वजह से जो ह्यूमन बींग्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह कंफर्टेबली जा सकते थे. They built carts with were pulled by animals. उन्होंने व्हील की मदद से ऐसी ऐसी कार्ट्स को बिल्ड किया जो एनिमल्स के द्वारा पुल की जाती थी. Do you know huskies, a breed of dog, are used in Greenland, Alaska and Canada to pull sledges carrying heavy loads over snow and ice. Now, in the villages of India, people still use carts pulled by animals like horses, bullocks and camels. तो इंडिया के अंदर आज भी कुछ विलेजेस में जो पीपल हैं वो यूज करते हैं कार्ड्स को जो एनिमल्स पुल करते हैं, जैसे हॉर्सेस, बुलॉक्स या फिर कैमल्स. इन सम हिली एरियाज डोंकीज, हॉर्सेस, म्यूल्स एंड पोनीज आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैमल जो है उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, एज इट इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन डेजर्ट. It is your activity in which you have to answer. First question is name the animal which looks small but can carry more load. ऐसा एनिमल जो छोटा दिखता है but more load carry कर सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, we can write here donkey. In a bullock cart maximum how many bullocks are used? एक bullock cart के अंदर maximum कितनी bullocks जो होते हैं वो use कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ पे maximum 4 bullocks का यूज कर सकते हैं. So we will write here 4 bullocks. Now, moving forward, elephants, horses and camels are used to give joy rides to people in towns and cities at fairs and carnivals. A mare is used by a bridegroom to reach the marriage venue. Elephants are used in big processions and celebrations. Animals powered transport is a term for the use of non-human animals for the movement of goods and people. ये जो animals होते हैं इनको हम बोलते हैं beast of burden. Animals that carry people and goods are also called mounts. It is your activity which says name 2 animals used in different places. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन जगहों पे कौन कौन से animals जो है वो यूज किए जाते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं plain areas में we have cow, horses. Hilly areas में we can write goat, sheep. Desert पे we can write camel, fox. And mountains we can write yak. And there is an animal known as Himalayan tahir. Now, a single horse pulls a tonga which has only 2 wheels. जो सिंगल हॉर्स होता है वो एक टोंगा को पुल कर सकता है जिसमें सिर्फ 2 व्हील प्रेजेंट होती हैं. अ हॉर्स कैरेज विद व्हील इज कॉल्ड अ बुग्गी. इट मे बी पुल्ड बाय 2 or 4 horses. Buggies are the tourist attraction in many cities like Mumbai. Now, the President of India travels by a beautifully decorated buggy on certain ceremonial functions.
What are pack animals? Pack animals कौन से होते हैं? Pack animals या फिर beast of burden are the animals जो carry करते हैं loads for us. The various pack animals that are used for transporting materials and goods are camel, horse, mules, yak, donkeys and reindeers. Yaks जो होते हैं वो found होते हैं in the places with higher altitudes. They are also used for carrying goods in Himalayan regions. Elephants जो होते हैं they are used to carry heavy logs in forest areas, while जो camel होते हैं they are the beast of burden in deserts. ड्रॉट एनिमल्स कौन से होते हैं? ड्रॉट एनिमल्स होते हैं जो कैरी करते हैं लोड नॉट ऑन देयर बैक, वो अपने बैक पे कैरी नहीं करते बट बिहाइंड देयर बैक्स. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स जो होता है वो कैरी करता है कैरेज बिहाइंड देम, ऑक्सन कैरी करती है कार्ट और अ प्लो बिहाइंड देम, बुलॉक्स ऑल्सो पुल अ प्लो और बुलॉक कार्ट बिहाइंड देम. नाउ हूफिक टिप ऑफ द टो होती है किसी भी एनिमल की विद अ स्ट्रॉन्ग थिक ब्लैक कवरिंग, यानी कि प्लूरल ऑफ हूफ इज हूव्स. जो हॉर्स शूज होते हैं दे आर मेड टू प्रोटेक्ट द हूव्स ऑफ अ हॉर्स फ्रॉम डैमेज. दे आर मेड ऑफ मेटल और सिंथेटिक मटेरियल. हूफ्ड एनिमल्स आर फास्ट रनर्स. जो हूफ्ड एनिमल्स होते हैं वो फास्ट रनर्स होते हैं. डू यू नो अ reindeer pulls a cart or sledge without wheels in a snow covered areas. सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एनिमल्स, यानी कि देयर आर वेरियस वेज बाय विच हम सेंसिटिव हो सकते हैं एनिमल्स के लिए. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो एनिमल्स हैं वो भी एक लिविंग बीइंग्स हैं जिनके अंदर फीलिंग्स प्रेजेंट होती हैं. दे ऑल्सो गेट टायर्ड एंड फील पेन लाइक अस. वी कैन सेव एनिमल्स फ्रॉम क्रूअल्टी इन मेनी वेज, जैसे कि लुकिंग वेल आफ्टर आवर डोमेस्टिक एनिमल्स. हम उनकी देखभाल कर सकते हैं बाय गिविंग देम फ्रेश फूड, क्लीन वाटर एंड शेल्टर टू लिव इन. Next is taking them to veterinary doctor when they are sick or injured. We can be sensitive towards animals by refusing to go to zoos or circuses where animals are used for entertainment, not making them work for long hours, and not hitting them with canes and whips. It is your grocery where wheel means a circular object which forms the part of a moving machine. Distance means the amount of space between two places. Forest means a large area of land covered with trees. Let's revise the chapter quickly. A mare is used by bridegroom to reach to the marriage venue. Animals that carry people and goods are called mounts. Single horse pulls a tonga which has only two wheels. Bullocks pull a plough or bullock cart behind them. Hoofed animals are fast runners and we should not hit them with canes and whips. Let's finish the chapter by doing its exercise. First is tick the correct option. Dash is known as the ship of the desert, camel. Dash animals are the animals that carry loads for us. Pack animals. Horse shoes are made of dash material, metal or synthetic, both A and B. Dash are used to carry heavy longs in forest areas. So we can write here elephants. Fill in the blanks. The world of transport would come to a standstill without wheels. Dash are used in big processions and celebrations. Elephants. Horse carriage with four wheel is called a buggy. Dash are beast of burden in desert, camels. And hoofed animals are fast runners. Next is true false. People still use carts pulled by animals. True. Horse is the most popular means of traveling in desert. False. Bullock pull a plough or bullock cart behind them. True. Hoofed animals are not fast runners. False. So students, this was a complete chapter about how we use animals for transport in previous days and as well today. So do revise the chapter again and I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.